Hello everyone, welcome to Rise YouTube channel. My name is Milan. Today I'm going to discuss one of the most important article from today's Hindu newspaper. Let's go to the article at first. IMD lowers monsoon outlook and puts up date of monsoon to June. Okay, why we picked up this article? Let's go through the PYQ lens. Question number 66. Indian Ocean Dipole, El Nino and Indian Monsoon. Three important keywords mentioned in the prelims itself, PYQ itself. In this question, prelims question, let's go through the not only 66 number question from 2017 prelims. If we look to the 2026 prelims, then एक चीज बहुत ही कॉमन है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड और डेवलप द कोर डिमांड ऑफ यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी नीड्स फ्रॉम अस, राइट. यूपीएससी सिंपली पुट देयर थॉट कि एक एस्पिरेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और कॉम्प्रीहेंड कैपेबिलिटीज दे, इसीलिए कि उन्होंने कि जो इतना लंबा लंबा पैसेज दिया एक क्वेश्चन में पेपर में, वो ये लोग चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर वो कॉम्प्रीहेंड कैपेबिलिटीज है कि नहीं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं कोई भी एक टॉपिक को लेके. तो इसीलिए मैंने टॉपिक को उठाया और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और डेटा फैक्ट्स जो आप लोगों को मैं बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्क्रीन पे देखिए और किस तरह से ये की इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स से जो काम करती है यूपीएससी प्रीलिम्स में, अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो आई विल डिस्कस वन बाय वन. तो लेट्स सी द एट फर्स्ट द कॉन्टेक्स्ट. Now, Indian Meteorological Department IMD on Friday lowered its forecast for 2026 Southwest Monsoon 90% of the long period average. So now the question is, what is LPA? What is LPA? Long period average. Long period average is an index IMD used for at least 30 to 50 years. 50 years of average rainfall data. ठीक है, अगर मान लीजिए ये 2070 है, पहले था 2070. नाउ एज्यूम इट टुडे इज 2000 years. Okay, now the year gap is 30 years. So IMD, what IMD do that? IMD collect the average rainfall data from 2070 to 2000. Okay, so that is the long period average. Now at the current context, IMD यूज इट कि जो हमारे जो एवरेज डेटा है वो 86 सेंटीमीटर है. तो व्हाट इज द डेटा दे कलेक्ट 1971 टू 2020. ठीक है, तो ये रहा हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की लॉन्ग पीरियड एवरेज. व्हाट इज द डेफिशिएंट मानसून? डेफिशिएंट मानसून मीन्स इफ सीजनल रेनफॉल बिलो 90% ऑफ एलपीए. इफ seasonal rainfall below 90% of LPA, that is called deficient monsoon. Now coming to the next, another important point, what is drought? कि the term drought, it was not officially declared by or defined by the IMD itself, right? So ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जो टर्म ड्रॉट है ये IMD डिफाइन नहीं किया. तो किसने डिफाइन किया? द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड नाउ सम key climatic factors on our southwest monsoon. There are some key climatic factors which are mentioned here in our newspaper directly, that El Nino, ठीक है, Madan-Julian oscillation and positive Indian dipole, IOD Indian Ocean Dipole, and which was asked in 2017 prelims itself. Now coming to the one by one, what is El Nino? Let's understand through the picture. ठीक है, ये रहा साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड द कोस्ट ऑफ पेरू. व्हेन ट्रेड विंड, ध्यान से समझिएगा, व्हेन ट्रेड विंड इज वीक, वह काफ़ी वीक है, तो यहाँ पर जो समुद्र का जो पानी है ये स्टील सिचुएशन में रहती है, ये बहती नहीं है. ठीक है, तो ड्यू टू स्टील सिचुएशन दिस एरिया वाज particularly getting warmer than usual condition. Due to more warming condition, more rainfall to the Peru coast. More rainfall to the Peru coast. ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश होते हैं. बट
रेनफॉल डेफिशिएंट मिलती है कहाँ पर देखने के लिए ना, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एरिया है यहाँ पर मिलती है। इसीलिए बोलते हैं कि एल नीनो अगर कभी हुआ है तो एल नीनो की वजह से जो मानसून का जो रेनफॉल का जो रेट है, मानसून रेनफॉल रेट है, वो काफ़ी कम होते हैं। बट एल नीनो के जो अपोजिट है लानिना, लानिना क्या करते हैं, इट एनहेंस द, इसका जो अपोजिट कंडीशन है लानिना, इट एनहेंस द मानसून, इंडियन मानसून। सो this is the important point you have to keep remember or concept. Now coming to the next concept, the Indian Ocean Dipole. What is Indian Ocean Dipole? That is our India, and this is our Southeast Asia, and this is the Africa. So this is the whole Indian Ocean, right? This is the whole Indian Ocean. What is the positive Indian Ocean Dipole? Positive Indian Ocean Dipole means the western section of Indian Ocean is getting warmer. This is the warm, more warm, ठीक है, but this is the cool region, cooler, more cooler. Due to more warming region, rainfall is enhanced during southwest monsoon. That is why the positive Indian Ocean Dipole enhance the our monsoon rainfall and help to counter our El Nino effects. Now third is Madan-Julian oscillation, eastward moving band of the clouds and rainfall near the equator. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज नियर द इक्वेटर, नॉट बियॉन्ड द इक्वेटर। ये सब ट्रॉपिक रीजन में नहीं मिलती है देखने के लिए। कंप्लीट से साइकिल एंड 3 to 60 डेज, कभी कभी 90 डेज भी होती है। नाउ इट इज एन एक्टिव फेज ओवर द इंडियन ओशियन, कैन टेम्पोरली स्ट्रेंथन मॉनसून रेनफॉल। ओके, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड हियर इज एमसीक्यू। प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एमसीक्यू को प्लीज आप लोग अटेंड कीजिए। So these all are the important concepts you have to remember and you have to understand. You have to understand the concept. And देखिए जो प्रीलिम्स 2026 गया है और यूपीएससी का डिमांड क्या है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसको पहले कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कीजिए। ये पहला डिमांड है यूपीएससी की कि पहला तो आप लोग कॉम्प्रिहेंड कीजिए, जो भी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, पीआईबी में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग जो टॉपिक्स है हर रोज़ प्रीलिम्स बेसिस में हम लोग लेके आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट, हमारा ये जो काम है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोगों तक शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।